Yes, good morning, children. How are you all? I hope you will be fine and healthy. So, today we are going to start a new topic of English grammar, that is opposite words. So, now, student, what is opposite word? Let's see. The words that which have opposite meanings with each other are called opposite words or antonyms. Opposite words कौन से होते हैं जो शब्द एक दूसरे के साथ विपरीत अर्थ रखते हैं वो क्या कहलाते हैं opposite words और उनको और हम क्या बोलते हैं antonyms. Okay student, now here are the 8 tools, so we learn one by one. Okay, now first rule is here, some opposite words can be formed by adding this dis before words. तो फर्स्ट रूल क्या है कि जो अपोजिट जो वर्ड्स होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं, उनसे जो अपोजिट वर्ड बनते हैं उससे पहले हम क्या यूज करते हैं dis. सो हियर आर द एग्जांपल, like is an opposite word is dislike. For here we use a dislike. Okay, next is honest. The opposite word is honest. Obey, disobey. Allow, disallow. So you can notice that in this word there are given a words and they are given a opposite words from this words. So here you notice that we use this. We use this before the words. We use this before the like. So make opposite word dislike, honest, dishonest, obey, disobey, allow, disallow. Okay, student, now you have to understood the rule number 1. Okay, now let's see the next rules. Rule number 2. Some opposite words can be formed by adding un before the words. कई opposite words होते हैं वो किससे form होते हैं un से. अब जब भी हम उसका opposite बनाएंगे तो उससे पहले हम क्या use करेंगे un. So given an example, kind. So we make opposite word unkind. So we use un before the word or make opposite word unkind. Happy, unhappy. Lucky, unlucky. Well, unwell. So here you notice that we make a opposite word adding a u and un. So I'm repeating again, kind, unkind, happy, unhappy, lucky, unlucky, well or unwell. So now we move on the rule number 3. Some opposite words are formed by adding in before वर्ड्स. देखिए अब हमें वर्ड्स रूल नंबर 3 क्या है, जब हम अपोजिट वर्ड्स बनाएंगे तो उससे पहले हमको क्या करना है, इन ऐड करना है. देखिए करेक्ट, इनकरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, complete, incomplete. So you can notice that we use the in before these words to make a opposite word. Okay, now I'm repeating again, correct. So we use in before the word. So make a incorrect. Direct, we make a in use before the word. Indirect, discipline, indiscipline, complete, incomplete. So now we move on the next rule. Rule number 4. Now student, some opposite words are formed by adding miss. Here to understood, adding mis miss before words. कई opposite जो words होते हैं वो किससे start होते हैं miss. हम उनसे पहले हम जब add क्या करेंगे उसमें miss. So here given the example, use, misuse, fortune, misfortune. Okay, now you understood, use, misuse, fortune, misfortune. Now we look at the next rule, rule number 5. Some opposite words are formed by adding IR, IL or IM before words. So now here are the given the examples are, first is legal. Legal make a I double R. क्या हो गया लीगल का, क्या हो गया illegal. Here are the word illegal. So here are the misprint of the typing. Okay, legal make a illegal. Regular make a irregular. Possible, impossible. Okay students, now you have to understood some opposite words are formed by adding IR,
IL और IM. So legal तो क्या बन गया? Illegal. क्या बन गया? Illegal. और दूसरा regular बन गया IR. किससे स्टार्ट हो रहा? IR. Regular. तो here we use a word regular. Okay, from this legal. तो regular क्या बन गया? Irregular. Possible, impossible. Have you understood the meaning of this opposite words? Now we move on the rule number 7. Some opposite words are formed by replacing opposite prefix in the word. देखिए कई opposite जो words होते हैं वो किससे form होते हैं? Replace कर दिया जाता है उनको ना. अभी तक हमने opposite words पढ़े थे, उनमें सबसे पहले क्या था, हम किसी में un use करते, किसी में mis use करा हमने, है ना. तो कई opposite words होते हैं वो बिल्कुल ही क्या होते हैं, replacing opposite prefix उस पर replacing कर देते हैं. देखिए आप देखिए प्रीफिक्स क्या होते हैं, जैसे जो वर्ड्स होते हैं उसके आगे के जो लेटर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं. सो हियर गिवन द वर्ड इनसाइड, वी यूज make a opposite word outside. So there the prefix it here is outside and here prefix is in. Okay, so inside make a outside, indoor make a outdoor. Okay student, have you understood? Now rule number 8. Some words cannot be changed into opposite words. कुछ जो words होते हैं उसमें opposite words जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? Cannot be changed into opposite word, but above rules and there. कुछ above rules हमने देखे थे कि words से ही वही रह रहे थे. उसमें हम क्या कर रहे थे? उसमें हम या तो prefix change कर रहे थे या हम उसमें un यूज कर रहे थे बिफोर, या हम उसमें ir रेगुलर का इरेगुलर बनाया, लीगल का इलीगल बनाया, है ना. तो ना अपोजिट वर्ड्स आर टू बी रिमेंबर. कुछ अपोजिट वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ऐसे जैसे बैड, गुड. तो हियर आर नॉट अ रूल, so you have to learn about these opposite words: bad, good, come, go, weak, strong, open, close. Okay student, now you have to learn these opposite words. Okay, now these opposite words, this topic will come in your board exam, so you have to learn these rules and you have to learn these another opposite words. Now here are the some important opposites. Okay, here are given a words and here are given the opposites. So now first is afraid. Afraid become opposite: brave. Empty, full. Small, big. Black, white. Deep, shallow. Dirty, clean. Many, few. Like, dislike. Right, left. Okay, now next is bad, good. High, short. Give, take. Evil, good. Worried, carefree. Great, little. Stupid, intelligent. Light, dark. Old, new. So you can notice here that these are given, these are words are given, but there is not a rules implied it. Okay, यहाँ पर कोई भी rules imply नहीं हो रहा. हमको क्या करना है? Just उसका opposite उसका word लिखना है. तो here the opposite of the words you have to learn it. Okay, now next is near, फार. देखो नियर क्या होता है? पास में. फार क्या होता है? दूर. तो अपोजिट होगी ना नियर, फार. लेफ्ट, राइट. क्रूल, मर्सीफुल. ओवर, अंडर. पुअर, रिच. मॉर्निंग, इवनिंग. फॉरगेट, रिमेम्बर. विक्ट्री, डिफीट. एबल, इनकेपेबल. ओके, नाउ you have to understood the words of opposite. Now next some other important opposite words here: go, come, busy, idle, sad, happy. Correct, wrong, night. अब correct का incorrect भी बना सकते हैं हम. correct का अब इधर हमने क्या लिखा है? wrong. night, day. stop, start. friend, enemy. long, short. fall, rise. Now here are given a exercise related to this opposite words. Now complete the following words given the opposite words to that given in the bracket. अगेंस्ट की सेंटेंसेस. देखो आपको अपोजिट जो वर्ड्स आपको लिखने हैं उसमें क्या सेंटेंस के जो एंड में क्या लिखा हुआ है? एक वर्ड दिया गया है, उससे रिलेटेड हमको क्या करना है? अपोजिट वर्ड्स लिखना है. तो वन डे शिवम एंड नितिन गॉट अप. वन डे क्या होता है? शिवम एंड नितिन गॉट अप. अब लेट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? अर्ली.
Okay, children. Now, second is the school is ours. स्कूल क्या है हमारा है. लेट अस क्लीन इट. अब क्लीन इट क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, लेट अस क्लीन इट केयरफुली. हमको क्या करना है, केयरलेसली का अपोजिट क्या हो गया, केयरफुली. नाउ थर्ड इज द एलिफेंट लाफ थिंकिंग हाउ डैश रैट्स कुड हेल्प देम बिग. अब हमको अपोजिट लिखना है बिग का, तो हम क्या लिखेंगे, वी राइट डाउन elephants laugh thinking how small rats could help them. Okay. Now number 4, boys at first we dash and listen to me patiently. तो पेशेंटली, अब इसका जो लाउड है, अब अलाउड का हमको क्या लिखना है, अपोजिट लिखना है. तो क्वाइट, क्वाइट मीन्स क्या होता है, चुप. लाउड का मतलब शोर मचाना. ओके. तो द बॉयज एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली. Now number 5, you all are dash students. Now you all are, अब इधर bad दे रखा है, तो you are good students. Good opposite of bad. Now you all are good students. Now number 6, in dash parts of India, Ramlila is organized during Navratris. The few of here, opposite of few here, we write a many. In many parts of India, Ramlila is organized during Navratri. So these are the fill-ups of related to opposite words. तो आपको ये ध्यान में रखना है, इस तरीके के आपके opposite words आएंगे, किसमें आएंगे, आपके एग्जाम के आएंगे. Okay. Now we move on the next exercise. Now, the sentence given below have some underlined words. Fill in the blanks choosing their opposites from the books. आपको क्या करना है, इधर else box दे रखा है, आपको उसमें से opposite क्या करना है, opposite word choose करना है. The first here is you are telling a lie, but I am telling the. Now here the opposite of lie. Opposite of lie का क्या बन जाएगा, you are telling a lie. तुम झूठ बोल रहे हो, but I am telling the ट्रूथ. मैं क्या बोल रही हूँ, सच बोल रहा हूँ. ट्रूथ मीन्स क्या होता है, सच बोलना. सेकेंड नंबर, वी शुड गिव अप बैड हैबिट्स बट ऑलवेज फॉलो. अब हियर you can notice always follow the good habits. Okay, हमको क्या, जो bad habits है उसको give up कर देना चाहिए, मतलब त्याग देना चाहिए, और always follow, कौन सी habits follow करनी चाहिए, good habits follow करनी चाहिए. Now number third, the park of my colony is dirty. हमारी कॉलोनी का जो पार्क है वो कैसा है, dirty. But the park of your colony is opposite here, dirty, clean. So here the park of your colony is clean. Next is love girls and dash equally. हमको किसको equally रखना चाहिए, love girls and boys. We should write here boys. Okay. Now next is man and dash of Rajasthan are brave. So here you notice the opposite of man here is man and women of Rajasthan are brave. Okay. Now student, you have to understand कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे एक्सरसाइज आएंगी आपकी बोर्ड एग्जाम में. Complete the following sentences by filling up the opposite words of word to that of given in bracket against each sentence. ओके. अब आपके सामने क्या देखे हैं, आपके सामने सेंटेंसेस दे रखे हैं और उसमें क्या होता है, आपके ब्रैकेट्स में वर्ड दे रखा है, आपको उसमें क्या लिखना है, अपोजिट वर्ड लिखना है. फर्स्ट हियर इज when dash shines upon the stars show their little light. So here given word is here everything. The opposite of everything is nothing. When nothing shines upon the stars show their little light. Okay. Second is why are there so dash students in the class today? So opposite of many here, few. There are so few students in the class today. Now third is one year there was no rain, so the pond started to dash up. So here the opposite of wet here is dry. So opposite लिखना है, wet का क्या होता है, dry. So one year there was no rain, so the pond started to dry up. Now next is the princely states were dashed to British. So here you notice that disloyal. So opposite of disloyal is here loyal. The princely states were loyal to the British. Now
Next is the state police went to Rastpal village to dash the school. Here the opposite of open, close the school. रास्तापाल विलेज है, ये आपके बुक में से ली गई है, जितने भी सेंटेंसेस हैं वो आपके बुक में से ली गई हैं. Okay. Now number 7, Roshan Lal dash cars. Hated. Opposite of hated is here is love. Roshan Lal loved cars. Okay. Now number 8, he had driven an old dash car for so many years. He has driven an old, here the opposite of fast, slow. Slow car for many years. They went to the park for a dash walk. Here they went to the park for a opposite of evening, morning walks. So now number 10. In the beginning, you may find dash to sit in this pose. Easy. So here the opposite of easy is difficult. So now student, you have to notice that we have to write the opposite of these words. So now I hope you understood this exercise. Here are given a next exercise. Big. राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. अब आपके सामने डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइज है ना ये, तो इसमें आपको क्या करना है, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको क्या लिखना है, वर्ड्स दे रखे हैं और आपको इसमें क्या लिखना है, अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं. फर्स्ट हियर इज स्मॉल, बिग. हियर द अपोजिट इज हियर स्मॉल. मैनी, फ्यू. कामली, नॉइजी. डिस्ट्रॉयड, बिल्ड. कलेक्ट, स्प्रेड. गो, कम. weak, strong. Harmful, harmless. Like, dislike. Empty, full. Now number 11, right. Here opposite of right, left. Love, hate. Beautiful, ugly. Hard, soft. Kind, cruel. Rich, poor. Strong, opposite of strong is here, weak. Now next is old, new. So now here are the 18 opposite words. So now I hope you I hope you have to understood the opposite words, and there are the 8 rules of the opposite words. Now student, if you have any problem you can ask me.